और ये है मेरा भाई तने और आप देख रहे हैं फन विद गुनाल तने। हमारे इस चैनल शुरू करने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि हम आपके साथ नॉलेज और फन शेयर कर सकें। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। चैप्टर शुरू करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट आर फैक्टर्स। सो फैक्टर्स, a factor of a number is an exact divisor of that number। जिसका मतलब, एक सेकेंड, तो इसका मतलब है कि जो एक फैक्टर का बेसिक मतलब है कि वो नंबर जो जिस भी टेबल में आता है वो टेबल उसका फैक्टर है। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक नंबर 9। तो 9 के फैक्टर्स हैं 1, 3 एंड 9। और ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो मतलब 1 हर नंबर का फैक्टर, क्योंकि जो कोई भी नंबर, सारे नंबर्स 1 के टेबल में आते हैं और एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। मतलब हर नंबर खुद का ही फैक्टर होता है, क्योंकि वो जो नंबर है वो हमेशा अपने खुद के टेबल में तो आएगा ही आएगा। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं मल्टीपल्स पे। सो व्हाट आर मल्टीपल्स? द आंसर ऑफ टेबल्स। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे 1 5 ज़ा 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 5 15 एंड सो ऑन। सो जो ये होंगे 5 10 15, ये सारे 5 के मल्टीपल्स हैं। मतलब जो टेबल में उनके आते हैं वो सब उनके मल्टीपल्स हैं। सो इसको सीखने के लिए हमें एक और चीज़ करनी होगी कि डिविजिबिलिटी रूल्स। सो डिविजिबिलिटी रूल्स का मतलब है, एक सेकेंड, डिविजिबिलिटी रूल्स। ये हमें कैसे पता लगेगा कि एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल है। फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन आते हैं, इज 12976 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। तो हमें कैसे पता लगेगा? इसके लिए हमें चाहिए डिविजिबिलिटी रूल्स। अब हम 2 से लेकर 5 तक नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल करेंगे। तो 2 के लिए बहुत इजी है। द डिजिट एट द वंस प्लेस शुड बी एन इवन डिजिट। तो ऑड इवन तो सबको पता ही है कि ऑड नंबर जैसे 1 3 5 7 9, इवन लाइक 2 4 8 0। सो द डिजिट एट द वंस प्लेस should be even, only then the number is divisible by 2 and it's a multiple of 2. So now divisibility by 3. A number is divisible by 3 only when the sum of all the digits of that number are divisible by 3. तो मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे हम इसमें करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 982। तो इज इट डिविजिबल बाय 3? हमें कैसे पता लगेगा? इसका मतलब है इसमें हम करेंगे सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो 9 + 8 + 2 इज इक्वल्स टू 19। 19 ही होता है ना, तो चेक कर लेते हैं। 17, हाँ 19। तो 19 डिविजिबल बाय 3? नो। सो इट मीन्स 982 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3. Now we'll check the divisibility by 4. It's very easy to find it, whether it is
divisible by 4 or not. For example, we are having a number 9932. Is this number divisible by 4? To find the divisibility by 4, we have to just check the last two digits, ones and tens place, and the digit formed by these two numbers is 32. 32 is divisible by 4, yes. So 9932 is also divisible by 4. Let us take one more example, like 8761. So we will see the last two digits, ones and tens. Is 61 divisible by 4? No, it's not divisible. So 8761 is also not divisible by 4. Let's move on to 5. It is very easy divisibility rule for 5. It is like the number at ones place should be 0 or 5. If the digit at ones place is 0 or 5, it is definitely divisible by 5. For example, 1, 2, 3, 4, 5. It's a number 12,345. So in this ones place we are having 5. So 5 is divisible by 5, yeah. So 5 is yes. So 12,345 is divisible by 5. Now I will tell you more divisibility rules, like divisibility by 6. For 6, the number should be divisible by 2 and 3 both. If the number is divisible by 2 and 3, only then the number will be divisible by 6 also. For example, the number is 2481. Is 2481 divisible by 2? I have told you that for divisibility of 2, we have to see the digit at ones place. 1 is an odd number, so it is not divisible by 2. So this number is also not divisible by 2, so it is not divisible by 6 also. Now we will take one more example. 8924. So 24, ones place 4. Yes, it is an even number, so it's divisible by 2. 2, yes. Now sum of all the digits, we will see that is it divisible by 3. 9 plus 8, 17, 19, 17, 19 and 23. Is 23 divisible by 3? No, it's not divisible by 3. So 8924 is not divisible by 6. Now I will tell you about divisibility rule of 8. For 8, we have to see the last 3 digits. Like we did in the divisibility of 4, we check the last 2 digits, and the number formed by the last 2 digits will be divisible by 4. If it is divisible by 4, then the whole number is divisible by 4. In the same way, in divisibility of 8, we will form a number by the last 3 digits. For example, 39845. So the number formed by last 3 digits, ones, tens and hundred, it is 845. Now we will check that 845 is divisible by 8 or not. So let's see. We have to divide it. 1, yes. Okay, 0. 4, no. 0. It is 0, 0. 4. 845, no. So it is not divisible by 8. 845 is not divisible by 8. So 39,845 is also not divisible by 3. For divisibility by 9, it's also very easy. It's same as 3. If the last 3 digits, the sum of last 3 digits, the sum of all full number is divisible by 9. So the number is divisible by 9. For 10, divisibility by 10, it's very easy. If the digit at ones place is 0, then the number is definitely divisible by 10. For example, 999990.
So it is having 0 in the end at ones place, so it is divisible by 10. Okay, so there are more numbers, like some are prime numbers and composite number. Prime numbers are those numbers which are having only two factors, 1 and itself. For example, the number 5. 5 is having only two factors, 1 and 5. क्योंकि 5 किसी और टेबल में नहीं आता, तो इसलिए only 1 and 5 are its factors. So 5 is a prime number. And composite numbers are those which are having more than two factors. Like we will take the number 24. 24 is divisible in 1, 2, 3, 4, 6, 8 and 24. So in these all the numbers, 24 is divisible, and these all the numbers are factors of 24. So 24 is a composite number. So prime numbers are those numbers which are having only two factors, 1 and itself, and composite numbers are those numbers which are having more than two factors. So this was all about today's video. If you enjoyed it, give it a thumbs up, subscribe to my channel and share this video with your friends. And if you have any doubt, you can ask me in comments, and please tell me in comments that I should make videos of Sanskrit and Hindi or not. Okay, bye bye, see you tomorrow.